Hello students, today we start our 14th chapter Rain, Thunder and Lightning. In this chapter we will learn about how rain is formed, okay, and what is the phenomena between thunder and lightning. So we will before discussing rain, thunder and lightning, firstly we will talk about the three states of water, okay. After that evaporation and condensation. Next one is how clouds are formed and water cycle take place. Next one is thunder and lightning. Okay. So firstly, what is a rain? It is a condensed moisture of the atmosphere falling in separate drops. We all enjoy a rain a lot. Okay, some students bath in it, some students play in it. Okay, and some students make a ships inside the rainwater. Okay, so and the most important thing is in India mostly farmers are depended for their crops on the rainwater. Okay, next one is on the surface of earth there is mostly a 75% is covered with water. Okay, but only 2% of water is present in solid form. Solid form means in the form of a ice or snow. Out of rest 98, about 97.4% water is available in ocean and seas, and only 0.6% is available in water, lakes and pond. Okay, and the water that is present in rivers, lakes and ponds are the fresh water that we can use in our daily life. Okay, but the water of ocean and seas we cannot use it many times because it is a very salty. Okay, so the only fresh water that we can use or drink is only 0.6%. Okay, so after that we start with the three states of water. We all know that water exists in three states: solid, liquid and gas. Okay, so first we talk about the solid state. So water exists as a snow और फ्रॉस्ट. मीन्स जो सॉलिड स्टेट है वाटर का वो किस में होता है, जैसे हमारी फ्रिज में आइस होती है. ठीक है, आइस क्यूब्स, स्नो, फ्रॉस्ट. When snow get compact, it forms ice. When you put water in the freezer compartment of a refrigerator, you get ice after some time. Okay. Similarly, at very cold places on the surface of the earth, water in river, lakes and oceans get also frozen. Okay. We also get snowfall and hailstorm during very cold winter day. Okay, so the main difference between snowfall and hailstorm is snowfall जैसे बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, पहाड़ियों में, तो वो जो स्नोफॉल होती है वो रुई की तरह होती है. ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ अ हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म जैसे आपको पता है हम कहते हैं वी गड़े पड़ रहे हैं. ठीक है, सो दैट सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्यूब्स, सो दैट इज़ नोन एज अ हेल स्टॉर्म्स. ओके, next one is liquid. So water exists in a liquid state at room temperature. Okay, next one is a gaseous state. When we heat up a liquid at a high temperature, then the water gets converted into vapors. Okay, so that vapors is known as a gaseous states of water. Okay, and next one is conversion of states of water. Conversion of states of water means how a water changes into solid, how a water changes into gaseous state, or how a water come back from gaseous states to a normal at room temperature, or how a solid get back a water in a normal room temperature. Okay, so firstly we will talk about the two terms, melting point and boiling point. Okay, so firstly what is a melting point? Melting of a solid into its liquid state occur at a fixed temperature, or a conversion of solid into liquid state. Okay, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है, ठीक है, at a given temperature, then that point is known as a melting point. Okay, and in the opposite of a boiling point, when
a liquid changes into a solid state at a given temperature, okay, at a particular temperature, then that point is known as a boiling point. Okay, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट में कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड. ओके, बट गैस बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैशियस. ओके, so that is the main difference between melting point and boiling point. Next one is freezing point. Freezing point in a simple way, when water converted into a solid state. Okay, means liquid changes into a solid state. Freezing of a liquid into its solid state occur at a fixed temperature called freezing point. Okay, here one example is when we take some ice cubes in a beaker. Okay, after some time they get converted into a solid to liquid state. Okay, the liquid state of ice cubes are water. Okay, after that we when that water we again freeze in the refrigerator, then these water again get back into the ice cubes. Okay, means this is the conversion of states. Next one is process of conversion of liquid into gaseous state is called vaporization. अगर लिक्विड गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो वेपराइजेशन कहलाता है. ठीक है, लेकिन वेपराइजेशन 2 टाइप्स का होता है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. So evaporation is a slow process of conversion of liquid into gaseous state. Okay, but the boiling is a fast conversion of liquid into vapor state because the temperature of in the boiling process is at high temperature. Okay, but in evaporation there is a normal temperature. Okay, so this is all about vaporization and boiling. Okay, next one is next we take some examples. Okay, when we put a wet clothes under the sunlight, then they get dry easily. Okay, and faster. But when we put that clothes inside the house, then the evaporation take place, but it takes very slowly. Okay, मीन्स इससे क्या पता चलता है कि अगर सन मीन्स जहाँ पर हीट ज़्यादा प्रेजेंस होगी वहाँ पर जो इवेपोरेशन है वो भी क्या है, जल्दी होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. इट इज़ फास्टर इन हॉट एंड वार्म कंडीशंस, इन ड्राई एयर एंड व्हेन विंड ब्लोस. मीन्स इवेपोरेशन है जो वो फास्ट कब होती है और वो कब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे. ठीक है, उसको हम कोई हीट नहीं प्रोवाइड कर रही इवेपोरेशन में. ठीक है, कोई हम उसका टेम्परेचर नहीं अराइज कर रहे. ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. ओके, so next we will talk about the what is the difference between boiling and evaporation. So the first point is boiling take place at a particular temperature while evaporation can take place at all temperatures. Second is boiling is a fast process whereas evaporation is a slow process. Boiling take place throughout the bulk of a liquid while evaporation take place only at the surface of a liquid. Next one is during boiling, movement of bubbles with sound can be observed while evaporation neither movement nor sound is observed. For example, when we take a beaker with water and put it on a gas, okay, and when we heat water at a high temperature, then the bubbles are arises and also a small sound is also produced. Okay, but in the evaporation term there is a no sound of a water evaporating. Okay, and no formation of any bubbles. So this is the 4 points that tells about the difference between boiling and evaporation. Okay, next term is the what is the condensation. Condensation is opposite to the evaporation. In evaporation liquid converted into vapors. Okay,
but in condensation we get back vapors into liquid form. Okay, the process of conversion of a gas or vapor into its liquid state, or a condensation take place at a particular temperature, that is known as a condensation point. Okay, अब ये हम कैसे करते हैं, जो वेपर से हम वाटर को कैसे बैक लाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बीकर लिया हमने, ठीक है, उसको हीट अप किया, उसमें बॉइलिंग हुई, ठीक है, उसमें वेपर्स बने, ठीक है. अगर हम उस बीकर को ऊपर से कवर कर दें प्लेट के साथ, ठीक है, तो वो जो वेपर्स हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, और वो जो वेपर्स हैं वो अंदर ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज formation of clouds and water cycle. So what is a water cycle? Firstly we will discuss the water cycle, or how a formation of a water cycle. Firstly, evaporation take place when a sun heat up the water bodies that is present on the surface of earth. Then these water bodies, the presence of water in these water bodies get heat up, okay, and that water evaporate in the form of a gaseous states, okay, that is known as a vapors. After that, when these vapors are going into a atmosphere, when they go up and up, air becomes cool and cooler, okay. So after that these vapors get condensed, okay. When a lot of amount vapors are collected at a particular place, then they become a heavy weight, okay, and they get condensed, okay. So when they cannot hold the vapors into a large amount, then the vapors get converted in the form of rain, okay. मीन्स सबसे पहले जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ के सरफेस पे, उस पे जो वाटर प्रेजेंट है, जो सन है उसको क्या कर देता है, वाटर को हीट अप करता है, ठीक है. जब वो वाटर को हीट करेगा तो जो वाटर है वो किस में चेंज होगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम वेपर्स कहते हैं. और जो वो वेपर्स हैं वो गैस फॉर्म में है, ठीक है. जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो जो वो वेपर्स हैं वो कूल डाउन होते जाएंगे, ठीक है. जब वो कूल डाउन होंगे तो वो कंडेंस फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है. क्योंकि कंडेंसेशन की क्या थी टर्म, हम वेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में, ठीक है. तो जब वो क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाएंगी और वो हैवी बन जाती हैं, ठीक है. हैवी होने के बाद उनमें जो वाटर की कैपेसिटी है होल्ड करने की वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, क्लाउड्स में. तो आफ्टर दैट दे फॉल अगेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ रेन, ओके. Then that rain is also come into the water bodies, then again water bodies heat up and go into in the form of a vapors, okay. Means this is the cycle of water, okay. Next one is thunder and lightning. Many times you hear a loud sound or crashing noise after a flash of lightning. अब जब भी बारिश होती है, ठीक है, बिजली चमकती है, तो आपको क्या है, जो बिजली है वो पहले दिखाई देती है, ठीक है. नहीं सॉरी, आपको पहले जो थंडर की जो आवाज़ है, कड़कती है, ठीक है, वो आपको पहले दिखाई देगी, लाइट बाद में दिखाई देती है, ठीक है. सो यू हियर अ लाउड साउंड और क्रैशिंग नॉइज फॉर अ फ्लैशिंग ऑफ लाइटनिंग, दिस इज कॉल्ड थंडर, ठीक है. मीन्स जो आपको आवाज़ सुनाई देती है तब वो क्या होता है, थंडर, और जो लाइट दिखाई देती है वो क्या होती है, लाइटनिंग, ठीक है, बिजली. थंडर एंड लाइटनिंग अकर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल. दे अकर व्हेन देयर इज हैवी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आइदर बिटवीन टू क्लाउड्स और अ बिल्डिंग एंड अ टॉल ट्री, ओके. बोथ थंडर एंड लाइटनिंग अकर साइमल्टेनियसली, वो एक साथ ही अकर होती हैं, ठीक है. यू सी लाइटनिंग फर्स्ट, आपको लाइट आपको पहले सुनाई देगी और जो आवाज़ है वो आपको बाद में सुनाई देगी. क्यों? क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लार्जर, द ट्रैवलिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ अ साउंड, ओके.
The thunder and lightning can cause severe loss of life and properties. During thunder and lightning, you should not stand under a tree or a building. Use an umbrella or touch or hold any metallic object. It is safer to remain inside the car or a house during thunder and lightning. Okay. So this is all about our chapter. For the live session, you have to prepare your back exercise. For example, true, false, filling the blanks, match the column and MCQ. Okay. You can do it by their own. Very easy chapter, Raji. Okay. So this is all about this chapter. Thank you and have a nice day. If you have any queries, then write down your questions and ask me in the live session. Okay. Thank you. Have a nice day.